आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. क्या हो रहा है ये? Hello, hello. Am I audible? My voice is coming? Anyone? Okay, okay, okay. Yes. Okay. So, good afternooning to you all. Means in the junction of afternoon and evening we are. And this is the time for previous year question discussion for ICAR PG Entomology. Okay, okay. My sound is also coming, but here it is lagging. No issues. ठीक है. Hello, hello. Radhe Radhe. Good evening. Okay. ठीक है. So actually already in our website you can found simply the previous year questions only PG. Today it's only PG. PhD ones that will not be done in the smart board, that I will normally take, and it will be available in that YouTube only, like, because it's not already prepared na, so I will prepare, and like within 21st June, means by next week or like 10 days it will be prepared. Okay, so before exam you will get 10 days for watching those videos, for like once revision from those videos. Okay, now it's only PG. Because I have only taken like ICAR PG 2020 to 2023 all the question papers, and 2024 is already completed by Saurabh sir. And in this particular class I will mainly discuss the entomology part. The nematology part will be discussed by Rupini ma'am. The general agriculture part will be discussed by other mentors who are dealing the general agriculture parts. Okay, so mainly the entomology part I will discuss now. When whatever doubts, whatever questions is there, you can simply ask me. Okay, you can simply type in the chat box. And let's start. And 21 people joined, but only 4 likes. Please like the session also. Okay. Just kuch karna nahi, please like the session and please share among your friends, because this is the previous year question discussion. So जब group में chats में जब एक दूसरे आप लोग reply करोगे, so आप दूसरे का knowledge ही increase होगा. Like your knowledge will only be increased when you are replying in the chat box. You are answering each other. You will get something new. You will learn something new. Okay, so please just like in the like the video as well. If you are getting benefit only, then only like. I am not that type of person कि जबरदस्ती बोलूंगा कि like करो. अगर benefit हो रहा है तो ही like करो, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करो. ठीक है. So let's start, not delaying more. So this is the ICAR PG 2025, मतलब last year का entomology question paper. The subject group is entomology and nematology, but I will mainly discuss the entomology part. And one thing that is like very strange, that is
less than 50% questions are there from entomology. So it's something strange. The main subject group is entomology, but less than 50% questions are from entomology. So ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, जल्दी फिनिश हो जाएगा. बट ऐसा अगर 2026 में होता है तो आप लोगों के लिए तो थोड़ा लाइक पैथेटिक हो जाएगा. होप फॉर द बेस्ट कि मोर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम एंटोमोलॉजी ओनली. ठीक है, चलो. So as you know, myself Rittik Sarkar, currently pursuing my PhD in entomology. So first question. So देखो, I don't think कितना लैग हो रहा है मेरा वीडियो, but one thing is like before I will take your answers, after that I will answer. Okay, before you guys before I answered, you guys should answer in the chat box. That will be better. That will be like proper revision for you guys also. So first you only answer, then I will answer. Okay, so this is the first question. So it's a statement type question only, and as you know, this type of questions are very frequent and very common in ICAR PG and PhD examination. Oh, already answers are coming. So statement one, just मैंने ना एक्चुअली क्या किया कि ऑल द वायरस एंड वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस आई केप्ट टुगेदर, और मैंने सारे को एक साथ रखा because yesterday only we have gone through like we completed the virus vector or arthropod vectors chapter. So this will be a direct practice of that chapter only. So that's why the virus vector questions will be there one by one simultaneously up to like 6-7 questions, 7-8 questions, virus vectors and questions related to vectors like that, virus or anything. So first question is a statement type question. Statement one is the virus transmission by mites is circulative but not propagative. ठीक है. Statement 2 is virus transmission by millibugs is circulative. So answer आप लोगों के according है C. So according to you guys, answer is C. Let's see. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Virus transmission by mites is circulative. That is true, but not propagative. Yes, that is also true. Because most of the cases mite transmission is not propagative. जो entomology treatise book is also there na, it is one like line is also there कि mite transmitted viruses are circulative but non-propagative. So statement 1 is correct. Non-propagative means in most of the cases, देखो exceptions are there. You guys will tell sir exception, this is the exception. Yes, exceptions are there, but generally वायरस ट्रांसमिशन बाय माइट्स इज सर्कुलेटिव बट नॉन प्रोपेगेटिव. क्यों नॉन प्रोपेगेटिव? मतलब जो वायरस होता है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है माइट के बॉडी में, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, बट सर्कुलेटिव होता है वो. देन वायरस ट्रांसमिशन बाय मिलीबग इज सर्कुलेटिव. यस, वायरस ट्रांसमिशन बाय मिलीबग इज सर्कुलेटिव एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज वायरस ट्रांसमिशन इज इन मिलीबग इज सर्कुलेटिव. नो, वायरस ट्रांसमिशन इन मिलीबग इज not circulative because this is semi persistent transmission. ठीक है, lost हो जाता है. This is no. Why? Because here it is semi persistent transmission. So it is mainly semi persistent transmission. और semi persistent transmission में आप लोगों को पता है, yes, very good दीक्षा. सेमी परसिस्टेंट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि लाइक फॉरगट में जाके फिर उधर से वो बाहर आ जाता है, लाइक उसका भी प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होता है वायरस का, सर्कुलेटिव प्रोपेगेटिव नहीं होता है जो मिलीबग ट्रांसमिशन होता है. इट इज बेटर, लाइक इट इज मोर रिटेंशन पीरियड इज मोर देन द नॉन परसिस्टेंट but less than the persistent in case of semi persistent. So you guys, all of you are correct. C is the correct answer. That is, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. ठीक है. Next question. So this is a matching type of question, and I think this question was the like one of the toughest question for so many of the people. But कुछ tricks मैं बताऊंगा. I will tell some tricks कि जिससे आप लोगों को याद हो जाए. ठीक है. I think lagging हो रहा है मे बी आप लोगों को भी. So आंसर करना, पहले आप लोग आंसर करना, फिर मैं आंसर बताऊंगा. मे बी it's a like difficult type of question. And this same type of question was asked in एकदम सेम ऐसा टाइप का क्वेश्चन था 2022 also. Okay, same type of question, and it's like a
डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि so many of the scientific name, I guess you guys only know this scientific name, Brevicorinae brassicae. Baki, I guess you guys don't know the other scientific names, so that's why it is somehow tough, but there is a trick. So उस trick के through आप लोग याद रख सकते हो। Firstly है Russelliana solanicola. So solanicola means it will be related to any Solanaceae crop. अब Solanaceae crop में क्या क्या आता है? It's like tomato, potato, then tobacco, chili, brinjal, the family of nightshade, etc. So इसमें देखो कहीं पे टोमेटो, पोटैटो, चिली, एनीथिंग इज देयर इन एनी ऑप्शन? वेरी गुड। सो एनी ऑप्शन में कहीं पे टोमेटो, पोटैटो, एनी सोलानेशियस क्रॉप इज देयर? हाँ, ब्रिंजल इज आल्सो देयर। वेरी गुड, आई जस्ट टोल्ड। इन ऑप्शन नंबर 2 यू गाइस कैन सी, कहाँ गया? इन दिस ऑप्शन नंबर 2 यू कैन सी दिस पोटैटो र्यूगो स्टंटिंग वायरस। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सोलानेसी से रिलेटेड है, सो इट इज लाइक अ Solanaceous crop. So this it will be directly matched with this one. अब जो कॉमन है cauliflower mosaic virus, you know cauliflower mosaic virus that is mainly transmitted by Brevicorinae brassica, or it's also known as cruciferous aphid, normal big white cabbage aphid, ऐसा इसका नाम होता है। So cauliflower cabbage, cauliflower mosaic virus, तो ये तो ऐसे ही पता है because this is already you know, so this is by Brevicorinae brassica. अब आता है बाकी दोनों क्वेश्चन। सो देखो एक में है जेब्रा चिप डिजीज ऑफ पोटैटो और एक में है कैरोट स्टोल वर्ड। सो इसका जो होता है इधर है इसका कॉमन नेम, ये याद रखो। इसको कैसे याद रखोगे? ये जो कहा गया, जस्ट अ सेकेंड, बैक्टीरियल कॉकरेल, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ओके। So these are the scientific names of this particular transmitters, okay? Just a second. So this carrot stool borer, this is the Bacteriocera trigonica, and then I think there may be some option problem is there, most probably. Can anyone confirm the answer? C also for potato. Yes, potato is like two places. Just a second. Tomato xylite, that is Russelliana solanicola. Brevicorinae brassica, that is cabbage aphid. Bacteriocera trigona, that is carrot xylite. And Bacteriocera cockerelli, that is potato xylite. So इसमें ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? ओके ओके ओके, दिस इज ए, बैक्टीरियो, ठीक है। यस, द आंसर इज मेनली डी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको बताता हूँ कैसे याद रखना है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, Brevicorinae brassica, ठीक है। देन उसके बाद दो क्वेश्चन, दोनों पार्ट, दोनों को लेके प्रॉब्लम है, बिकॉज पोटैटो इज देयर, पोटैटो इज देयर। सो इन दोनों में से किसी एक का आंसर तो होगा ये फॉर श्योर, इन दोनों में से कोई एक का आंसर होगा ये फॉर श्योर। अब यही देखना है कि देखो इन दोनों में से लाइक दिस बैक्टीरियोसेरा कॉकरेली, दिस बैक्टीरियोसेरा कॉकरेली, दिस इज द पोटैटो साइलिड, ऑल्सो कॉल्ड एज टोमेटो साइलिड, ठीक है। एंड दिस Russelliana solanica, this is also another tomato xylid. This Russelliana solanica is also. So correct answer will be either D के साथ 2, D2, just a second, D2, zebra chip C1, B4, A3. This one is correct. इसका और एक बार मैं बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड। A3, B4, C1, D2, ठीक है। अब एक सेकेंड साफ करके अच्छे से पूरा लिख देता हूँ।
So this is the correct answer. Yes, Solanicola can be for both. This actually this question ना, this question is I think incorrect question, क्योंकि ये जो दोनों है रसेलियाना सोलानिका एंड बैक्टीरियोसेरा कॉकरेली, सो ये जो दोनों ही है ना, दोनों ही एक्चुअली both of them can be associated with potato. So this is somehow this question is should be dropped. This question has to be dropped, but I don't know what happened, because for both B and C, for both B and C, one could be correct. So इसको याद रखना. But NTA has given the answer की like जो कैरोट स्टोलबर्ड है उसमें तो बैक्टीरियोसेरा कॉकरेली होता है. So that बैक्टीरियोसेरा कॉकरेली, that is the like normal tomato psyllid or potato psyllid or like that. सॉरी, कॉकरेली मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पोटैटो रूगो स्टंटिंग वायरस होता है उसमें जो कॉकरेली होता है दैट इज लाइक नॉर्मल, दैट इज ऑल्सो लाइक पोटैटो और टोमेटो साइलिड, और ये जो रसेलियाना सोलानिकोला है दैट इज ऑल्सो लाइक पोटैटो साइलिड. दिस इज ऑल्सो लाइक रिलेटेड टू पोटैटो और टोमेटो साइलिड. ठीक है, और ये जो फर्स्ट वन है कैरोट स्टोलवुड है वो होता है बैक्टीरियोसेरा ट्रिगोनिका. ये जो बैक्टीरियोसेरा ट्रिगोनिका होता है वो होता है कैरोट साइलिड, और दैट इज द जेब्रा चिप डिजीज रासेलियाना सोलानिकोला से होता है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट. और कॉलीफ्लावर मोज़ेक तो पता है ब्रेविकोराइना ब्रासिका है. yes sucking pest, so we can remember like that. Actually इसमें जो साइलिड ऑलमोस्ट सबको सारा ही साइलिड है, पोटैटो साइलिड, टोमेटो साइलिड, कैरोट साइलिड, सारा साइलिड ही है. कैबेज एफिड को छोड़ के अदर थ्री जो है एक्सेप्ट दिस वन 1 2 3, all the three are साइलिड्स, all three are साइलिड्स. सो मेन प्रॉब्लम कहाँ अराइज होगा ना लोगों का, अगर मैं कोई एग्जाम में खुद रहता तो मेरा भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जस्ट अब बिफोर द सेशन आल्सो मैंने एक बार चेक किया था इसमें. So in that also it was written that potato rugo stunting virus that is transmitted by both this Raceliana solanicola and this one, the Bacteriocera cochrelli. So both of them should be correct, but according to option की if you guys are going on, so एक को पिक करना है, तो आप लोग दोनों ही कर सकते थे. This question has to be dropped, but I think most of the people didn't attempt this question, that's why this didn't drop. सो पहले आप लोग इसको कैसे करोगे, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस को सिंपली ब्रेविकोराइना ब्रासिका से कर दिए, डन. कैरोट स्टोलबर्ड को सिंपली बैक्टीरियोसेरा ट्रिगोनिका से कर लिए, डन. देन पोटैटो रूगो स्टंटिंग वायरस सिंपली उसको एक से मैच कर दो, और जेब्रा डिजीज ऑफ पोटैटो जो लास्ट में बचा रहेगा उसको रसेलियाना सोलानिका से मैच कर दो, सिंपली लाइक दैट. सो इट्स दिस क्वेश्चन इज देयर ना, दिस क्वेश्चन इज समहाउ लाइक नॉट ऑथेंटिक. जस्ट अ सेकंड, व्हाई इट इज वेरी डूइंग लैगिंग. Said these two options are with potato, can be zebra chip and rugo stunting. Yes, both of these can be there. D should be the answer, okay, for this one. A 3, B 4, C 1, D 2, like that. So this question has some problem. ऐसा और भी एक क्वेश्चन था, तो इसको याद रखना जस्ट. Yes, Cochrane mainly studied about psyllid in potato, so that we can remember like that. तो देखो पोटैटो का सैलिड तो दोनों ही हो सकता है, जेब्रा चिप डिजीज ऑफ पोटैटो इज आल्सो देयर. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज सम कंफ्यूजन, ओके, इसको याद रखना. इसको मैं लास्ट में एंड के पहले और एक बार आऊंगा इस क्वेश्चन में. सो ये जो है ये वाला चार्ट एक बार जस्ट देख लेना. रसेलियाना सोलानिकोला, that is like tomato psyllid, Brevicorina brassica, cabbage aphid, Bactericera trigonica, carrot psyllid and Bactericera cochrelli, potato psyllid और tomato psyllid. चलो ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है 25. इसका आंसर बताओ. वो वाला क्वेश्चन थोड़ा लाइक दैट, द प्रीवियस क्वेश्चन वाज समहाउ आई थिंक मिस, like some mistakes are there. The questions na, there are some mistakes are there by the preparing agency only, so that is not a problem. I think this type of questions usually used to be dropped.
इसका बताओ आंसर। बी बी। साइड प्लीज। ओहो, सॉरी सॉरी। Try. Carrot Apiaceae family that contains genus Try word contains 3 clusters of umbel like that. Okay, okay, okay. You just connected it with horticulture. Good. Yes, ऐसे याद कर सकते हो। ये सब कुछ बोला था ना मैंने। दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन दैट ईयर। ओके। हाँ, इसका तो इजी है, सब बता, लाइक ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग दिस। ए बाद में देखते हैं। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट, दिस इज लाइक दैट नॉर्मल टॉस्पो टाइप ऑफ वायरस। टॉस्पो कौन सा ट्रांसमिट करता है? सिंपली दिस वन, फ्रैंकनिएला ऑक्सीडेंटलिस थ्रिप्स, वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स। देन आफ्टर दैट टोमेटो येलो लीफ कर्ल। लीफ कर्ल हो रहा है, व्हाइट फ्लाई से होगा। कॉलीफ्लावर मोजाइक सेम, मैंने बताया ना कि एक पैटर्न में लाइक दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सेम रेविकोरेनिया ब्रासिका वाज देयर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आल्सो सेम रेविकोरेनिया ब्रासिका इज देयर, एंड दिस इज डाउनी मिल्ड्यू। दिस इज कॉज्ड बाय द फंगस, डाउनी मिल्ड्यू फंगस। सो द करेक्ट आंसर इज A1 B2 C3 D4। ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वेरी बेसिक मैचिंग था। व्हाइट फ्लाई, हाँ व्हाइट फ्लाई दैट इज बेमिसिया टैबाकी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर प्लीज। हाँ सेम, देखो इसमें भी सेम ये वाला है। दिस वन इज देयर ऑल्सो सेम, कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। दिस इज ऑल्सो देयर। आंसर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सी। ठीक है, correct. So Myzus persica, you guys know already. In potato, the potato leaf roll virus, the potato virus Y, these are mainly transmitted by the Myzus persica. Simple. Bemisia tabaci white fly, same. कॉटन लीफ कर्ल वायरस स्ट्रेन बी जो होता है उसका, जो व्हाइट फ्लाई का स्ट्रेन बी होता है, दैट इज मेनली यूजुअली ट्रांसमिटिंग द कॉटन लीफ कर्ल वायरस बेमिसिया टैबाकी का। देन सी, डायफोरिना साइट्री मीन सिट्रस साइला, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, बहुत बार बोला गया इसको। सिट्रस साइला इज मेनली ट्रांसमिटिंग द सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, एंड दिस वन इज सेम लाइक द प्रीवियस वन। सी इज द करेक्ट आंसर। बाप रे, तो ज्यादा ही करेक्ट हो गया ये। C is the correct answer. A2, Myzus persica is the polarivirus. This is also known as polarivirus. Then B4, whitefly cotton leaf curl virus, सबसे easy question. Diaphorina citrus, citrus greening by citrus scylla. And D is the Franklinella occidentalis, Franklinella schultzei, ये सब ट्रांसमिट करते हैं टॉस्पो वायरस को, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स। ठीक है, दिस वन, why it is lagging? Anyone? Okay.
Scientific name? Why not thrips, sir? कौन सा? Pseudocardiac disease is mainly, देखो अगर 4 ऑप्शंस रहे, 4 ऑप्शंस में the most suitable option you have to pick. ठीक है? Thrips may can be transmitting this pseudocardiac disease, but this is mostly transmitted by this tree hopper, Microtalis mellifera. हाँ, yes, very good. Microtalis mellifera. So this is mainly transmitting the pseudocardiac disease of tomato. Thrips can also transmit, but mainly the pseudocardiac disease is transmitted by the tree hopper, that is Membracidae. ऐसे उसका होता है, फैमिली होता है इसका Membracidae. What is the other name of tree hoppers? What are the other name of tree hoppers? Anyone? Taxonomy से कोई बताओ. What are the other name of tree hoppers? Tree hoppers is also known as कोई और एक कोई नाम से. Microtalis. Cowbug. Tree hoppers, Membracidae are also known as cowbug. Yes, tree hoppers are also known as cowbug. Membracidae or Membracids. Scientific name is Microtalis mellifera. ठीक है? So that is mainly transmitting the pseudocardiac disease of tomato. ठीक है? Next question. Answer this. Statement 1. Piercing and sucking type of mouthparts make insects non-effective vector of plant viruses. Statement 2. Biting and chewing type of mouthparts make insects effective vector of plant viruses. बहुत easy question है. B. मतलब both the statements are false. Yes. इसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. Piercing and sucking type of mouthparts make the insects most efficient or effective vector of plant viruses. Biting and chewing type of mouthparts makes insects less क्या नॉन होना चाहिए, मतलब हाँ मतलब लेस ही बोलना चाहिए, लेस इफेक्टिव. Plant viruses. So this is also wrong, this is also wrong. So both the statements are false. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था. हाँ, बनाना बांचिट ऑफ वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, डेली डेली क्वेश्चन रहता है हर एक जगह पे. बनाना बांचिट ऑफ वायरस. Only B, मतलब this one means only B, क्योंकि ऑप्शंस आर लाइक एफिस गॉसिपी, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, एफिस माल्वा, टॉक्सोप्टेरा ग्रामिनियम. सो मेनली जो पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा होता है, दैट इज मेनली द एफिशिएंट ट्रांसमिटर ऑफ द बनाना बांचिटो वायरस. कैन एनीवन टेल मी व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इट इज देयर? persistent, semi persistent or non persistent? हाँ, फुरके डिजीज और काटे डिजीज. I'm sure you guys will type this one only, the cardamom फुरके और काटे disease, that is mainly also transmitted by this Pentalonia nigronervosa. Yes, very good, persistent. This was I was expecting. ये एफिड से ट्रांसमिट होता है, but still it's a persistent transmission. ठीक है, this is a persistent transmission by this Pentalonia nigronervosa. Very good everyone. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इतना सारा वायरस का क्वेश्चन था, बाप रे बाप.
Okay, now coming to the somehow a pest question. It is mixed with pest of crops, like pest of field crops, pest of storage grains, pest of हाउस पेस्ट, सब कुछ का एक मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बहुत इजी है। बताओ मैचिंग, बहुत इजी है। टाइम लेके करो, गलती नहीं करो। बताओ बताओ बताओ। चलो सब बता रहे हो आप लोग। बी, लेट्स सी। सो सिमिसिडे, सिमिसिडे इज द फैमिली ऑफ बेडबग। सिमेक्स लेक्टूरिया, सिमेक्स हेमिप्टेरस, सिमेक्स लेक्टुआरिस एटसेट्रा, जो होता है बेडबग्स। So bed bugs, as you know, is a pest of like household pest, one kind of, like it's a very much important, like dangerous for human beings also. They used to suck blood, okay, from mammals. So simicidae means simple bed bug. Bostricidae, as you know, Bostricidae, that is simply the powder post beetle. Can anyone tell me one example of a storage grain pest from the family Bostricidae? And these Bostricidae are also known as which, like the pronotum of Bostricidae, and also Bostricidae is any common name, dash headed borer, hood shaped pronotum or helmet shaped pronotum, and one very important example of a Bostricid stored grain pest. और उसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन उसके साथ भी ऐड करूंगा, पहले ये तीनों बताओ, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग सब। टेल हैं, पल्स बीटल बॉस्ट्रिचिडे, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट पढ़ो अब जाके अच्छे से। पल्स बीटल इज ब्रूचिडे। पल्स बीटल इज ब्रूचिडे, ठीक है। यस यस यस, हो गया। सो बॉस्ट्रिचिडे में क्या क्या है? लेसर ग्रेन बोरर। अब मुझे ये बताओ, लेसर ग्रेन जोपरथा डोमिनिका। yes yes, very good. Pronotum is hood shaped. And helmet like pronotum, anyone? Helmet like pronotum in case of anyone? Helmet like pronotum? हो गया, very good, very good. एनोविडे में हेलमेट लाइक प्रोनोटम होता है। यस, एनोविडे में एग्जांपल होता है स्टेगोबियम पैनिकम, जैसे कि अपना फिर हाँ, कैन एनीवन टेल मी द साइंटिफिक नेम्स ऑफ सिगरेट बीटल एंड ड्रग स्टोर बीटल? एक का तो मैंने बता दिया, स्टेगोबियम पैनिकम, पेनिसियम पैनिकम। दूसरे का क्या है? व्हाट आर द टू साइंटिफिक नेम्स ऑफ स्टेगोबियम एंड अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट? स्टेगोबियम आई जस्ट टोल्ड, बट यू शुड टेल। मुझे तो पता है, मैं क्यों बोलूं? आप बताओ, आपका एग्जाम देना है। साइंटिफिक नेम ऑफ सिगरेट बीटल एंड ड्रग स्टोर बीटल? यस यस, लैसियोडर्मा सेरिकोरायने। सेरिकोरायने स्पेलिंग थोड़ा एक बार चेक करना, ठीक है? कोरायने होता है CORYNE। लैसियोडर्मा सेरिकोरायने इज द सिगरेट बीटल एंड स्टेगोबियम पेनिकम जस्ट मैंने बताया, दैट इज द ड्रग स्टोर बीटल। अब क्वेश्चन ये है, कैन एनीवन गेस व्हिच क्वेश्चन आई विल आस्क नाउ? सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड सर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का मैराथन नहीं हुआ, तो चलो उसका ही थोड़ा कर लेते हैं इसके साथ साथ। द which type of hole they will produce in the
grains. Firstly, the Bostrichidae or the lesser grain borers, and secondly, the Anobides or the Stegobium panicum or Lasioderma sericoraene. Which type of boreholes they usually form? Circular, pinhead sized, or anything? Yes, pinhead sized by who? pinhead sized by मैंने बताया था क्लास में, pinhead size और एक है irregular. pinhead size मेनली करते हैं ये जो एनोबिट्स है, ये दोनों स्टेगोबियम एंड लेसियोडर्मा. इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. और इरेगुलर करता है अपना सो पिनेड हो गया, इरेगुलर हुआ, लास्ट बाकी है सर्कुलर. अच्छा, इसके नीचे लिखता हूं तो फिर याद रहेगा अच्छे से. सर्कुलर, अभी सर्कुलर बताओ आप लोग. सर्कुलर भाई, सर्कुलर भाई. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों ही होगा. यस, राइस वीविल, पल्स बीटल एटसेट्रा. गुड गुड. सो ये क्वेश्चन इज लुक, जब आंसर करोगे साइंटिफिक नेम के साथ आंसर करोगे, ठीक है. अभी एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, राइस वीविल बता दिए, साइंटिफिक नेम भी साथ में बताओगे, ठीक है. राइस वीविल इज द सिटोफिलस ओराइजे, ठीक है. और पल्स बीटल इज द कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस. सो दिस VVI फॉर VVI, very very important for JRF, SRF. Pinhead sized Stegobium and Lasioderma, irregular holes Rhizopertha dominica और lesser grain borer, circular holes pulse beetle as well as rice weevil etc. और भी होता है बहुत. Good. Helmet like pronotum in case of Anobidae, hood like pronotum in case of Bostrichidae, then और कुछ pulse beetle families Bruchidae, that's it. ठीक है, प्रोनोटम का मॉडिफिकेशन और इन सब में से क्वेश्चन पूछता है. और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से. व्हाट आर मीलवर्म्स? व्हाट आर मीलवर्म्स? व्हाट इज द फैमिली ऑफ मीलवर्म्स? एनीवन? स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट रिवाइज हो जाएगा इजीली. टेल. मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, बस मुझे एक पेन और एक बोर्ड दे दो. रेड फ्लोर बीटल, वेरी गुड, हो गया. दीज आर द लाइक रेड फ्लोर बीटल ऐसे नहीं लिखो, हाँ बस गुड. टेनेब्रानिडे, यस. So Tenebranidae are also known as mealworm. Like yellow mealworm is also there, red floor beetle is also there, etc. Phycetidae, Pyralidae. The Indian meal moth, mealworm and meal moth is different. Okay, Indian meal moth is different. ठीक है, चलो. So Bostrichidae के चक्कर में इतना कुछ हो गया. So Bostrichidae are also known as powder post beetle. Meloidae सबको पता है. Blister beetle. So blister beetle में what is the chemical present in blister beetle that cause blister like symptoms in which the chemical is like sprayed or attacked? जब blister beetle वो chemical spray करता है उसमें blister like spot formation हो जाता है. Cantharidin. Very good. Cantharidin is that particular chemical that will form blister like spot. और एक चीज, what is the grub type of blister beetle or larval type of blister beetle? A particular term is there for blister beetle larva. Can anyone tell what is that particular term of the larval type of blister beetle? Particular form of larva? Yes, very good. Triangulin. Q. Why? Why this name is there? Triangulin. Why?
Why? Yes, cantharidin is there, triangulin is also there. Why this larva is known as triangulin larva? Another thing, which type of metamorphosis is observed in blister beetle? Metamorphosis type, वो तो बता ही दोगे, देन बताओगे द larval habitat and food type. फूड टाइप, लार्वा मीन्स इधर ग्राब, मतलब ब्लिस्टर बीटल तो ठीक है, समझ ही लोगे, ग्राब ही होता है. गुड. हाइपर मेटामॉर्फोसिस ऑफ 3 क्लॉज, वेरी गुड. 3 क्लॉज, वेरी गुड. हाइपर मेटामॉर्फोसिस में एक्चुअली हाइपर मेटामॉर्फोसिस यू नो डिफरेंट लार्वल इंस्टर का हैबिटेट फूड टाइप डिफरेंट होता है. तो मेरा वही क्वेश्चन है, और एडल्ट का भी डिफरेंट हो जाता है. सो ब्लिस्टर बीटल में जो लार्वा होता है, देखो लार्वा इज प्रीडेटर ओके, बट ना देयर इज अ बिग क्वेश्चन. लार्वा में जितने भी सारे या फिर ग्रब में जो इंस्टार्स होते हैं 1 2 3, they have also like different food habits. And adults is, you know, it's like feeding on the pollen of the flower, mainly petals. Adults जो होता है that are the feeder of the petals of the flower, जो adults होते हैं. बट मेरा क्वेश्चन अभी ये है, जो इंस्टार होते हैं ना, लार्वल इंस्टार होते हैं, what is their food habit? कोई ठीक है, someone is predator, but not all the larval instar are not predator. First instar active larva is the predator, that is the triangulin larva. सेकेंड और थर्ड इंस्टार लार्वा में कुछ चेंजेस है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ. what are the difference between the second and third install larva in case of blister beetle? ठीक है, वो बताओ. Then Muskidae is our house fly. Sorghum fruit fly is also there in Muskidae. ठीक है. So A के साथ 2, B के साथ 1, C के साथ 4, D के साथ 3. B, उफ, this is not सही नहीं, इतना बड़ा कैसे हो गया? अभी ठीक लग रहा है. ठीक है. फर्स्ट इंस्टर लार्वा ईट्स ऑन ग्रासहॉपर एग, और सेकेंड थर्ड इंस्टर लार्वा बताओ. नहीं तो मैं लास्ट में जब फिनिश करूंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, हाइपर मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है. एंड मेनली this is a very important question in any competitive examination. Write about the hypermetamorphosis and then write about the blister beetles and their larval forms with hypermetamorphosis. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का जो मैंने बताया उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, हाँ ये भी थोड़ा लाइक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम लाइक थोड़ा बहुत एडवांस टाइप क्वेश्चन था JRF के लेवल से, क्योंकि ये क्वेश्चन लिया गया था चैपमैन से. ये चैपमैन से था डायरेक्टली टेकन. ठीक है. एक दो क्वेश्चन में बताया था ना कि हार्ड होता है, क्योंकि रैंक भी तो डिसाइड होता है ना कुछ फ्यू क्वेश्चंस के कारण, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का. सो वो ये सब क्वेश्चंस होता है. ये आपको अपने अगर सब्जेक्ट में नॉलेज है, सेमेस्टर में पढ़े हो, क्लास वगैरह में किए हो तो ही कर पाओगे. सो स्टेटमेंट 1 इज लाइक कैलिफोरा कंटेन्स 2 स्कैपल ऑर्गन्स, scala of Lone and the basal organ cupula of Lone. Statement 2 is these are the structures present in the haltear. So इतना समझ गए, इसमें haltear है, कैलिफोरा है, और एक स्केपल ऑर्गन है और एक बेसल ऑर्गन है. ठीक है, 2 स्केपल ऑर्गन है, एक बेसल ऑर्गन है. सो इतना तो समझ आ रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू डिप्टेरा. इट इज रिलेटेड टू डिप्टेरा एंड haltear रिलेटेड क्वेश्चन. और आपको ये भी पता है जो haltear होता है that is mainly acts like a balancing organ. mainly जब फ्लाई करता है, हाउस फ्लाई, तो वो क्या करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है. ठीक है, वाइब्रेशन होता है उसमें. बस ओनली वन आंसर, अदर्स Talaria Swant, your preparation is very good, you are answering well. Yes Chaitali, you are also correct. First instar larva feed on grasshopper egg. Good. ठीक है, समझ गए कि ये क्वेश्चन ब्लो फ्लाई से रिलेटेड है, कैलिफोरिडे. फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में यू नो ब्लो फ्लाइज आर, बिकॉज दे व्हेनेवर देयर इज डेड बॉडी इन द कॉर्प्स द ब्लो फ्लाइज विल कम. So helps in forensic entomology, forensic studies, etc. Califoridae. So according to all of you, this is correct. Means
there are two scapal organs or scala of Leeuwenhoek, and there are the basal organ, that is cupula of Leeuwenhoek. Now, yes, this is both are correct, and these are structures present in the Holter. Holter का ये part होता है. अब ये जो diagram है इससे समझोगे. ठीक है, फर्स्टली ये वाला डायग्राम देखो. कैलिफोरा ये फिर जो ब्लोफ्लाई होता है उसका ये हॉल्टेयर का स्ट्रक्चर है, मतलब डिप्टेरा का मैंने अभी बताया. सो देखो, दिस इज हॉल्टेयर. उसका एक नॉब होता है, बीच में एक स्टॉक होता है, लास्ट में इसका बेस होता है, बेसल पार्ट और ये डिस्टल पार्ट. हाँ, अब इंसेक्टा में कुछ लिखा हुआ है, लाइक व्हाट इज द टर्म फॉर बेसल पार्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर डिस्टल पार्ट. सिंपली इन केस ऑफ the Holter, that is present in case of the dipterans, basal part of Holter has a particular term, distal part of Holter has a particular term. That is there in basic insecta book only, in the wing chapter. So you just tell me what are the terminologies or what are the terms there. Okay, tell. Anyone? इंसेक्टा भूल गए तो मुश्किल की बात है. ठीक है, इंसेक्टा याद रखना, उसको गलती नहीं करना उसमें. आंसर प्लीज. स्कैबेलम. अरे मैं ही बोल दिया. अच्छा, एक स्कैबेलम है, दूसरा नॉट पेडिकल. नॉट पेडिकल, स्कैबेलम और डिस्टल कैपिटेलम. वेरी गुड. स्कैबेलम एंड कैपिटेलम. गुड. These are the basal and distal part of Holter. So इसी में देखो, ये जो इसका बेसल पार्ट है और बेस है, ठीक है, इसमें देखो दो, like there are two, you can see there are two or एक one pair, simply you can say this is one pair of sensory structure. एक paired sensory structure है जो अपना scala of Loene जो होता है, ये this is the scapal organ is the paired sensory structure. And this one is the just at the base. This is the basal. This see just it's like a dome like structure. डोम मतलब समझते हो ना, जो मस्जिद वगैरह होता है, लाइक द मॉस्क्स आर देयर, उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है, दैट इज आल्सो नोन एज द डोम शेप्ड. ठीक है, सो दिस इज आल्सो लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर. STRUCTURE. So this is the dome like structure. So ये जो दोनों पार्ट होता है, so these parts are also mainly helping, these are like acting as a mechanoreceptors, mainly helping in equilibrium and flight stabilization in case of the Calliphora or the blowflies, or mainly in case of, you can say, the dipterans. So this is the normal structure just for your understanding कि Holter modify हो जाता है, कौन सा wing में होता है, hind wing में modify होता है Holter का. Can anyone tell me? Holter is the modification of four wings in case of which order or which insects? इसका तो मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया. This is the knob, this is the central part of stalk, and this is the base of the Holter. In the base of Holter, there is a paired sensory structure or paired sensory organ, that is the scala of Loene, or you can say the scapal organ. And at the base, like at the end, that there is a dome like structure. This is like a dome, and this is known as the basal organ or the cupula of Loene. ये जो Loene है, ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, Loene. इन्होंने फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए Loene के नाम में इसको रख दिया गया है. ठीक है, हिस्टोरिकली Loene फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड दिस. इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था. Good. Strepsiptera. Can anyone tell me Phyloholter is present in? ये बताओ, कौन बता सकता है? Yes, Pseudoholter is good. Strepsiptera.
ये बताओ, दिस इज फॉर यू गाइस। फाइलोहॉल्टेयर, ये भी बता रहा हूँ, दिस इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक हॉल्टेयर्स, थ्रेड और यू कैन से रिबन, रिबन लाइक मॉडिफिकेशन, रिबन जैसा होता है, ऐसा ऐसे टाइप का होता है, रिबन्स, यू अंडरस्टूड। ये अगर बता दिए तो समझ जाऊंगा। नो, नॉट मेल स्केल इंसेक्ट्स, नॉट मेल स्केल इंसेक्ट्स में भी हॉल्टेयर होता है, लेकिन ये अच्छा आंसर दिए, स्केल इंसेक्ट नहीं बोले, क्योंकि स्केल में फीमेल्स आर आल्सो देयर, दोज आर एप्टेरस और एप्टेरस। गुड, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, मैं ही पता होगा। ये मेनली होता है ना न्यूरोप्टेरन्स में, न्यूरोप्टेरन्स में, कुछ न्यूरोप्टेरन्स में, कुछ लाइक आउल फ्लाइज में। ये क्वेश्चन याद रखना, फाइलोहॉल्टेयर इज प्रेजेंट इन न्यूरोप्टेरन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मेरे लिए तो ट्रीट देना चाहिए, मुझे आप लोग, मतलब आप लोग को मुझे ट्रीट देना चाहिए जो देख रहा है ये वीडियो। चलो, तो ही जो स्केला ऑफ लाउने स्केपल ऑर्गन्स है, लाइक पेयर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स, क्यूपुला ऑफ लाउने दैट इज द बेसल ऑर्गन, स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैंने बता दिया, इट्स लाइक डोम लाइक सेंसरी ऑर्गन, मेनली बोथ आर प्लेइंग अ सिंपल रोल इन सेंसरी पार्ट, मेनली in like balancing or maintaining equilibrium, or you can say flight stabilization etc. ठीक है, ओके। एंड दिस इज लाइक द अल्ट्रा, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। जब माइक्रोस्कोप जो टेम वगैरह होता है, सेम टेम, उस पे जब आप हॉल्टेयर को देखोगे ऐसा लगेगा। ये जो होता है ये सब सेंसरी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, दैट्स इट। और वो एक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो हॉल्टेयर का, बहुत सुंदर सा, दैट्स इट। एंड तो इसका आंसर क्या था, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट ये बताओ, given below are two statements. Statement 1, Arthropleona and Symphypleona are the suborders of Collembola. Family Thripidae belongs to the order Thysanura. बताओ आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन का मुझे पता नहीं किसको, कितने लोगों को पता है, बट सेकंड वाला तो पता ही होगा, स्टेटमेंट 2। प्रीति, मिस्टेक कैसे हो गया, क्या लिखा है थ्रिपिडे, और इसमें क्या लिखा है थाइसान्यूरा। प्रीति बोपचे, चेक वंस, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। थाइसैनोप्टेरा होता है वो थ्रिप्स का ना, थाइसैनोप्टेरा, थाइसान्यूरा इज डिफरेंट, दैट इज यू नो द सिल्वर फिश। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, हो सकता है मिस्टेक, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना, जल्दी जल्दी में ऐसे कर देना, नहीं कर देना। नो इश्यूज, नो इश्यूज, ऐसे सॉरी नहीं बोलो, मतलब मुझे भी बुरा लग रहा है, बट मैं ऐसे ही जस्ट बोला कि क्वेश्चन पढ़ के करो। सो फर्स्ट जो है आर्थोप्लियोना एंड सिम्फाइप्लियोना, these are the suborders of Collembola, this is correct, and family Thripidae belongs to the order Thysanura, not correct, क्यों, क्योंकि Thripidae belong to Thysanoptera। सो क्या होगा आंसर, स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false। गुड गुड। सो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलता है कि क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, ओके। Which of the following is the example of the extinct insect orders? बताओ, प्रोटोओडोनाटा और प्रोटोडोनाटा, प्रोटोडोनाटा ही बोलते हैं इसको, मेगा सेकोप्टेरा, सी इज द पार्लरिया, डी इज द बोथ 1 and 2। टेल टेल, इसलिए मैंने एक डायग्राम भी डाल दिया।
सो दिस प्रोटोडोनाटा एंड दिस मेगासेकोप्टेरा। एक्चुअली एक चीज देखना ना कि कुछ अननोन टाइप का नेम होता है ना, जब भी ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के टाइम, अगर ऐसा कुछ होता है अननोन टाइप का क्वेश्चन होता है, बोथ AN2 होता है, एंड यू नो पार्लरिया, व्हाट इज पार्लरिया? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द कॉमन नेम और अनदर नेम ऑफ पार्लरिया? टेल क्विकली, इंसेक्टा में है। एनीवन? व्हाट इज पार्लरिया? It is lagging. What is Parleria? Common name Plecoptera. Very good. Stonefly. So stonefly, you know, this is like not extincted, but जो Protoodonata और Megasequoptera है, both are extincted. Both are like the ancient form of, you can say, the Paleopteran insects. These two orders are the Paleopterans one. ठीक है, these are the Paleopterans orders, and both of them, like, this is the diagram of this Megasequoptera, this is the diagram of this Protoodonata, like the giant ancient dragonflies. Yes, this is stonefly. So these two are like extincted, like these were there in that Carboniferous, like those what you know, what to tell, like Jurassic, Triassic, उस time के ये है dragonflies or like prehistoric Paleopteran insects. ठीक है. Now this one, identify the correct sequence of the insect orders ranging from largest to smallest in terms of number of species. मतलब more number of species to less number of species. बताओ क्या होगा आंसर? यस, गुड. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. बी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? कोलियोप्टेरा इज द हैविंग द मोस्ट स्पीसीज, लाइक ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस. उसके बाद कौन सा है? डिप्टेरा, थर्ड. सेकेंड में कौन है? कैन एनीवन टेल? मेरे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बताओ. लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा में सेकेंड और थर्ड कौन है? लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा में who is second and who is third? Okay, hymenoptera is also there. अच्छा, ये भी बताओ. अब ये बताओ 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है इनमें से? 2, 3, 4 बताओ. Yes, I am asking that only. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ना, इसमें तो देख ही रहा है सिंपली कोलियोप्टेरा के बाद डिप्टेरा है. सो कोलियोप्टेरा के बाद सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इधर डिप्टेरा में है, उसके बाद ऑर्थोप्टेरा में, बाकी जोराप्टेरा तो यू नो. जोराप्टेरा प्रीवियसली वाज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर, बट नाउ दैट इज द मैंटोफाज्माटोडिया. ये क्वेश्चन कभी कभी इशू होता है. सो अगर करंट रिसेंट क्लासिफिकेशन देखोगे तो मैंटोफाज्माटोडिया, पुराना क्लासिफिकेशन के वाइज जोराप्टेरा अभी भी करते हैं लोग आंसर. सो इसका हिसाब से A, D, C, B, दिस इज करेक्ट, नो इश्यूज. बट ये मुझे बताओ, कोलियो, हाइमेनो, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा. सेकेंड कोई बता रहा है लेपिडोप्टेरा. सो कोई ऑथेंटिक? 1 कोलियो, 2 लेपिडो, 3 हाइमेनोप्टेरा, 4 डिप्टेरा. CHDL, CHDL. तो ज्यादा आंसर आ रहा है CHDL में, बट सम ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस एंड दिस. इन दोनों में से सेकंड एंड थर्ड कौन है? तो फिर ये प्रूव हुआ कि 1 इज कोलियो, 4 इज डिप्टेरा, लाइक अकॉर्डिंग टू यू गाइस, है ना? 2, 3.
सो 2 लेपिडोप्टेरा, कोई बता रहा है 2 हाइमेनोप्टेरा। सो कहाँ से देख के बता रहे हो आप लोग? कोई सोर्स, कुछ एनीथिंग, एनी सोर्स? एनी सोर्स, वेबसाइट? रुको मैं भी एक बार चेक करता हूँ कोई सोर्स में। ओके ओके, मेरे को भी यही मिला, कोलियो लेपिडो हाइमेनो डिप। तो ठीक है, इसी को याद करना, टॉप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, कोलियो लेपिडो हाइमेनो डिप। ठीक है, ट्रीटाइज में भी है तो सही है। ठीक, तब तो कोलियो लेपिडो हाइमेनोप्टेरा डिप्टेरा, दैट्स इट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द जीनस जोरोटाइपस बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्रोटोरा जोरोप्टेरा डिप्लूरा कोलम्बुला। ओके, रिफ्रेशर ट्रीटाइज, ठीक है। ठीक है, इसका क्या ही टाइम लगा है। जोरोटाइपस नाम से पता चल रहा है, इट इज फ्रॉम द ऑर्डर जोराप्टेरा। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ जोराप्टेरन्स? एक पर्टिकुलर नेम होता है, डैश इंसेक्ट्स, दे आर नोन एज डैश इंसेक्ट्स। एनीवन? व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ जोराप्टेरन्स? डैश इंसेक्ट्स, बी ओके, एंजल इंसेक्ट्स, एंजल इंसेक्ट्स। They are known as the angel insects, this zoropterans। ठीक है, angel, GL। aquatic insect family Japygidae belongs to the order। इसका आंसर की गलत था, आंसर की गिवन रॉन्ग। इसका मैंने देखा था, आंसर की गिवन रॉन्ग भाई, जो भी है। यस, आंसर है इसका डिप्लूरा, बट आंसर की जो वो लोग दिए थे ये प्लेकोप्टेरा, क्योंकि देखो जैपिगिडे मतलब जैपिक्स, सो दिस इज सिंपली डिप्लूरन। तो आप लोगों को पता ही है, डिप्लूरन्स आर नोन एज जैपिगिडे, जैपिगिड्स। बेसिक क्वेश्चन है, सब सही करके आया, बट उसने आंसर की गलत दे दिया। सो एक्वाटिक इंसेक्ट फैमिली जैपिगिडे बिलोंग्स टू द ऑर्डर डिप्लूरा। गुड, सेम मैचिंग ऑलरेडी, आई थिंक वी मैच दिस वन, दो बार आ गया, नो इशू। सिमिसिडे, बेडबग, बॉस्ट्रिचिडे, पाउडर पोस्ट बीटल, लिस्टर बीटल, हाउस फ्लाई। चलो, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट, द ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा is also called as Plectoptera, Ringcota, Thiraptera, Copiognatta। Good evening. Order Ephemeroptera is also known as Plectoptera, Ringcota, Thiraptera, Copiognatta। हो गया, चलो। Plectoptera, not Plecoptera, it's the Plectoptera। Ringcota means, Thiraptera means, Copiognatta means। चलो जल्दी बताओ, what is Ringcota? Ringcota is the other name of anyone? This is okay, Ephemeroptera, this is the like mayfly, dayfly, shadefly, etc. That is okay, but what is ringcota? एंजल फ्लाइज, एंजल फ्लाई तो उसको बोलते हैं। अच्छा, क्या लैगिंग हो रहा है बहुत आज? मे बी सम लैगिंग प्रॉब्लम इज देयर इन यूट्यूब। कोलम्बोला, कोलम्बोला कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मेरे मोबाइल, यस। कोपियोग्नाथा, एनीवन? सोकोप्टेरा, गुड, आ गया आंसर।
हो गया, डन. This is the other names. Plectoptera is also known as Ephemeroptera. Next. Ringcoda is Hemiptera. Good. So this is the recent classification. Just for your knowledge, I kept this. This is also known as the Christensen classification, and this is compiled by Dr. Mogli Ramaiah sir, scientist from ICAR IRA New Delhi. And this is very good compilation. That's why I kept it here. Okay. And this is the source is mainly the Christensen Parsons classification. So you can see na, just see here in this particular classification, there are like 27 orders properly. IMS में 29 था, but इसमें 27 है. और इसमें एक चीज देखो, जो ब्लैटोडिया है उसमें कॉकरोचेस एंड टर्माइट्स आर और देयर, टर्माइट्स आर आल्सो देयर. जो आइसोप्टेरा था वो इसमें एज ए इंफ्रा ऑर्डर है. हाँ, और जो हेमिप्टेरा है उसमें सब ऑर्डर्स हम लोग क्या पढ़े थे? जूम सर, जूम कैसे करेंगे? It is already I posted in the group. I like posted in the group for so many times. जूम तो नहीं हो पाएगा अब तो, इसको पता नहीं, मे बी मुझे नहीं पता इसको कैसे जूम करता है, बट मैं बता रहा हूँ जस्ट. ग्रुप में इट इज ऑलरेडी देयर, आई ऑलरेडी शेयर्ड. देखो जो हेमिप्टेरा होता है उसका सब ऑर्डर्स हम लोग we read mainly Heteroptera and Homoptera according to old classification, but according to new classification it is 4 suborders: Heteroptera, Ochenorhyncha, Sternorhyncha and Coleorhyncha. Coleorhyncha is the moss bugs, ये पूछता है एग्जाम पे, और this is not present in India, not present in India. This Coleorhyncha, this is not present in India. ठीक है, ये याद रखना. बाकी Sternorhyncha में aphid scales are there and Ochenorhyncha में the cicadas, different types of hoppers are there. और उस पे देखो कहा गया सोसोडिया. सोसोडिया में एक साथ आ जाता है थीराप्टेरा, मेलोफागा एंड एनुप्लूरा. एज यू नो एनुप्लूरा इज आल्सो नोन एज साइफनक्यूलाटा. It is already there in the group, but I will again share. ठीक है, no issues, don't worry, I will share. और ये जो है इसमें you can also see overall classification, the classification of the phylum Arthropoda. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से. ठीक है, VBI. It will be betterment. It is for your betterment only. And this one is also from this only they used to ask question. क्या question पूछता है? ये वाला. Cephalocarida. I think this is also there in treatise. Treatise first chapter also you can find this one. This is important. And this Neoptera, Polyneoptera, Paraneoptera, these things are also very important. ठीक है, I will share again. I will share in the group. Don't worry. I think you joined late. And this one also important. Exam में they used to ask questions. Sea spiders. This is from the class Pycnogonida. The sea spiders are from the class Pycnogonida. It is also VVI for exam. ठीक है, this is also VVI. So these things once and twice you just go and read, have a look. That will be enough. ठीक है. And this is simply a wonderful compilation by Dr. Mogli Ramaiah sir. He is a wonderful, outstanding scientist from IRI New Delhi. Then this very basic classification, this very basic, like what is this thing? Simply like matching. Just tell me the matching का answer. Anyone? Answer of this matching? Thysanura, Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, Monotricia, Adephaga, Zygentoma, Heteroptera. D. ठीक है. Thysanura is, as you know, there is Archaeognatha and Zygentoma. इसी में है. ये देखो, इसमें चेंज हो गया है अभी. Thysanura उसमें है Zygentoma और एक सब क्लास में है Archaeognatha. एक में है जंपिंग ब्रिसल टेल, एक में है सिल्वर फिश. सो डायरेक्टली इससे उठा के दे दिया ये वाला, डायरेक्टली फ्रॉम इट. Then Hemiptera, suborder is there, Heteroptera, Lepidoptera, Monotricia is there, and another one is the Ditricia. Coleoptera में Adiphaga, another one is the
पॉलीफागा। एडेफागा में मेनली जो प्रीडेटर्स वो आते हैं, पॉलीफागा में मेनली जो पेस्ट्स वो आते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज A3 B4 C2 C1 D2. Which of the following statements about metamorphosis and molting in insect is correct? Holometabolous insects undergo incomplete metamorphosis with nymphs resembling adults. Molting is the process of shedding the exoskeleton to allow for growth controlled by the hormone ecdysone. Hemimetabolous insects have a pupal stage where major morphological changes occur. Apolysis refers to the hardening of the new exoskeleton after molting. What is the answer? Yes, A is false. Very good, because holometabolous insects, there is complete metamorphosis. So this is wrong. Khatam. Wrong. B correct. ठीक है. Molting is the process of shedding of the exoskeleton for allow growth. Yes, controlled by the hormone ecdysone. Very good. This is correct. इसमें तो कोई गलती नहीं है. Ecdysone, molting hormone. Okay. Hemimetabolous insects have a pupal stage. कहाँ पे pupal stage रहता है? No. Mainly hemimetabolous insects, they usually don't have pupal stage. ठीक है, usually don't have. No. ठीक है. Apolysis refers to the hardening. ये तो होता ही नहीं है. Apolysis means shedding or casting off. So this is also wrong. This is the correct one. Molting is the process of shedding the exoskeleton to allow for growth controlled by the hormone ecdysone. Very easy and very simple and very basic one. ठीक है. Which of the following pests are secondary feeder? Flat grain beetle, long-headed floor beetle, saw-toothed grain beetle. Option D is all of the above. बताओ. Scientific name also. Scientific names. ठीक है, that is correct. Scientific names. एक एक करके. Very important. ठीक है, all of the above is correct. I am asking about the scientific names. Wow, very good. This one I was not expecting. Yes, इसलिए मैंने छोड़ दिया था. Very good, अक्षता. Yes. So all of them are secondary feeders. Except this, can anyone tell me any other example of a storage grain pest that is having the secondary feeder? That is the secondary feeder. Except these three, any other? बहुत important और बहुत common है. Any other secondary feeder? Yes, perfect. The red floor beetle, Tribolium castaneum. Very good. That is also a secondary feeder. Yes. Mainly क्या होता है, प्राइमरी फीडर फीड करने के बाद वो लोग फीड करते हैं उसी ब्रोकन ग्रेन्स को, जैसे ब्रोकन आटा, मैदा एक्सेट्रा. एंड बाकी जो ये होता है क्रिप्टोलास्टस माइनिटस, दिस इज द स्मॉलेस्ट
Can anyone tell me? Yes, very good. Caryodon serratus. Common name? What is the common name? CN. What is the common name of Caryodon serratus? What is the common name of Caryodon serratus? Yes, groundnut. Then groundnut bruchid. Yes. Caryodon serratus is the largest stored grain pest. That is also known as the groundnut bruchid. ठीक है. और ये जो शॉर्ट रूटेड ग्रेन बिटल होता है ना, 6 करके बोथ साइड पे ऐसे ऐसे उसका शॉ लाइक प्रोजेक्शंस होता है. ये नंबर याद रखना 6. इस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. For the short-toothed grain beetle, and all of them are secondary feeders. The ability of an organism to survive both the extreme of environmental conditions should be there. Environmental condition was proposed by Blackman, Shelford, Leavick, Hatch and Slack. Blackman, Shelford, Leavick, and lastly the Hatch and Slack. बताओ. Very important. इसका तो बेसिक बता दो आंसर. Yes, very important. इसका तो बता देता हूँ. C4 cycle by it. What is by Leavick? What is by Blackman? Tell. What law of क्या? जीए का क्वेश्चन है बाकी दोनों. Tell. Yes. Law of minimum by Leavick, and Blackman has given. हाँ, Leavick law of minimum, Blackman law of. Anyone? Very easy, very important. Shelford, yes. Law of tolerance, I know. Law of limit, yes. Limit or limited factors. Law of limit or limited factors or limiting factors. ठीक है, limiting factors ही अच्छा लगेगा सुनने में. Law of limiting factor is given by Blackman. Law of tolerance is given by Shelford. That's why it is written that survival ability. Both extreme condition means tolerance. Leavick, law of minimum, Hatch and Slack, C4 cycle of the photosynthesis. हो गया? Good. Now this one. Bombyx mori is solely domesticated worm throughout the world. Bombyx mori is solely domesticated worm in India. Answer? So according to you guys, answer is C. But the thing is like in answer key, yes, in answer key they have given A. This is according to the answer key.
But the thing is na, the main thing is like India में except Bombyx mori, others are also cultivated, others are also reared or domesticated, and world में mainly Bombyx mori is cultivated. So according to concept, this one should be correct. According to like the books, according to the knowledge, according to the normal basic information, this should be correct. But NTA has given the answer this. This is given by NTA. So this is somehow like you can say थोड़ा controversial था. मुझे भी लगता था like मेरे अकॉर्डिंग भी यही करेक्ट है जो मैंने सोर्सेज देखा. But NTA is given like this. This is the answer. Bombyx mori is only domesticated throughout the world. Bombyx mori is solely domesticated in India. But according to me, this should be the answer. But NTA has given this one as the answer. So this is somehow controversial. मैंने अपना साइड बता दिया. अब you guys can follow whatever you want. Okay. So it's like controversial question. Third generation pesticide is bifenthrin, methoprin, deltamethrin, bialythrin. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. देखो इसमें ये टर्म लिखा है solely. If it is written like mostly, then it would have been correct. इसमें solely लिखा है ये वाला टर्म. Not written mostly. Third generation pesticide is yes, very good. Methoprin. Rest these three are fourth generation. Compound used in cockroach bait is thallium sulfate, formaldehyde, boric acid, metaldehyde. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी बताओ. इसका बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी. See, good. For ants, thallium sulfate is used. For snails, metaldehyde is used. ठीक है. But cockroach के bait में boric acid use किया जाता है. Yes, very good. Boric acid. Statement 1 is LC50 is the concentration required for a given insecticide to kill 50% of the exposed insects. Statement 2, EC25 is the concentration required for a given insecticide to kill 75% of exposed insects. बहुत easy है, बताओ. What is the answer? Yes. Yes, B is the correct answer. Q, LC50 means 50%. और इसमें कितना लिखा है 25. इसमें कितना लिखा है 75. Wrong. It should be 25 ना. So ये क्या है? Correct है. This one is wrong. Correct. Statement 2 is incorrect. Very basic question. How you are writing C? It's written LC50, 50% of the exposed insects. That's why B should be the correct answer. The fumigant commonly used in granaries against insect pests and rodents in India is magnesium phosphate, zinc phosphate, aluminum phosphate, calcium phosphate. This one, not previous one. Question number 24, anyone? ठीक है, good. ठीक है. Aluminum phosphate is known as the Selphos or Selphos tablet, mainly used in go downs as a fumigant for storage grain insect pests as well as rodents. But this is written commonly. But rodenticide, this is rodenticide exclusively.
करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसमें लिखा है इंसेक्ट पेस्ट एंड रोडेंट्स, दोनों के लिए सेल्फोस इज गुड। द पेस्टिसाइड having or with nematicidal properties are abamectin, imamectin benzoate, milbemycin or milbemectin flonicamide. बताओ, what is the correct answer? Anyone? Anyone? Yes, good. Actually the thing is there ना, milbemectin और milbemycin don't have nematicidal property, ठीक है। एक्चुअली ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, कंफ्यूजन था इसमें भी, लेकिन आंसर की में था एबामेक्टिन और इमामेक्टिन बेंजोएट, दे बोथ हैव सेम nematicidal property, so both A and B are correct in this question, ठीक है। Abamectin or imamectin benzoate, you know imamectin benzoate proclaim that has nematicidal property, and abamectin is the active compound, abamectin A, abamectin B, B1A, B2B, like that, B1A, B1B, abamectin B1A, B1B, that is the active compound in imamectin benzoate, ठीक है। So इसको याद रखना, this is like having the nematicidal property. Next, pusa bin, bitumen, hapur bin, stone bin, mud storage structure, coal tar drum bin, kothis, chitor bin. Can anyone tell what is the correct answer for this? For this one, correct answer? Anyone? Okay, good. As you know, pusa bin, this is the mud storage structure mainly. This was developed by Dr. S. Pradhan. Then bitumen, you know bitumen, this term is related to coal. Bituminous, lignite, anthracite. So bitumen मतलब कोल, कोल से बिटुमेन। हापुर बीन को कोठीज बोलते हैं। और एक चीज स्टोन बीन, एज यू नो राजस्थान, चित्तौर, दिस चित्तौर इन राजस्थान देयर आर सो मेनी कैसल्स, स्टोन कैसल्स, सो स्टोन बीन इज द चित्तौर बीन। सो 1A, B2, C3, D4, this is the correct answer. Very good. A. Okay. Very easy question. Fossorial, natatorial, raptorial and jumping legs. Praying mantis, grasshopper, mole cricket, water beetle. जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी बोलो इसका आंसर इजीली। बहुत बेसिक क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का। ओके, ऑलरेडी आंसर आ गया, ठीक है, गुड। ट्यूटोरियल हो गया। डी गुड। बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन, इन सबको कभी गलती नहीं करना। टुकड़ा डिजीज इज कॉज्ड बाय फेरेसिया वर्गाटा। टुकड़ा डिजीज इज कॉज्ड बाय मेकोनेलिकोकस हर्सुटस। कल ही बताया था, इन वेक्टर क्लास ओनली आई टोल्ड। So this is a disease in, it should be like not caused, this should be like mainly transmitted by, cause or like transmitted by, mainly it should be there.
One kind of viral disease this is. Yes, good. So Tukra disease is mainly transmitted by the pink mealybug, and you know this is the mealybug. So this is transmitted by the 2 is false and 1 is true. So 1 is false, sorry, 1 is false and 2 is true. Okay. Next question. Forewings are modified into pseudo-halter in case of which order? So this is like forewing ऐसे हो जाता है, hind wing उसका like that ऐसा होता है. Okay, वो जो insect होता है hind wing like ऐसा ऐसा होता है उसका. Yes, good. They are like internal parasitic insects. Siebold's organ, silk gland, book lungs, organ of Rivaga. Can anyone tell me the answer for this one? Siebold's organ, silk gland, book lungs, Rivaga organ. B. Siebold organ, you are telling Crista aquastica, a hearing organ in some crickets and grasshoppers. Okay. Silk gland, modified salivary glands or labial glands. Book lungs, this is mainly respiratory organs in case of arachnids, matlab spiders. Rivaga's organ is also known as, can anyone tell me what are the other name of organ of Rivaga? What is the other name of organ of Rivaga? इसका अलग नाम और एक नाम क्या है? What is the other name of organ of Rivaga? Anyone? Yes, good. So this is the और मेसोस्पर्मिलेज. वो क्या करता है? बार्लिस ऑर्गन, इसमें लिखा ही है sac like organ for receiving spermatozoa ventral surface of the abdomen of female bedbug. इसमें क्या होता है? traumatic insemination, मतलब मेल बेडबग आके हिमोसिल में डायरेक्टली एग ले करता है अपने ओविपोजिटर के थ्रू, और उसके बाद जो एग्स होता है वो जो ऑर्गन ऑफ रिबागा या फिर बर्लिस ऑर्गन होता है उसमें एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, उसमें स्टोर होता है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज A2, B1, C3, D4. अब इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को. व्हाट इज Siebold organ? What is this? What is Siebold organ? This is the Siebold organ. So this is the female reproductive system of cricket, the grillus. As you know, this is the ovary, this is the lateral oviduct. फिर दोनों आके कहाँ ज्वाइन हो रहा है? कॉमन ओविडक्ट में. Here is the spermatheca. Mainly the sperms used to be stored here. Genital chamber. This is also known as vagina. Pouch like. This is ovipositor. And here the Siebold organ is present in this particular area. ठीक है. This is the Siebold organ in the female reproductive system of grasshopper or grillus cricket. So this is like a, where is this? This is like this is not a hearing organ. This is somehow given a mistake. This is mainly helps in
reproduction. Okay. Somehow there is a mistakes by NTA. So this is like helps in mainly reproduction, this Siebold's organ. Name of the committee which approves BT crops in India. Insecticide Registration Committee, Genetic Engineering Approval Committee, Asia Pacific Plant Protection Commission, Insecticide Resistance Action Committee. Yes. But this A stands for not approval. It should be appraisal. ठीक है? GEAC जो होता है Genetic Engineering Appraisal Committee. Just remember this, not approval. Good. The insecticidal activity of Bacillus thuringiensis crystal was first demonstrated by Hane, Ishiwata, Berliner, Whiteley. Very important question. I think this is a mistake. Okay, so this is one thing for your correction. ये शायद diagram में कुछ mistake है. Siebold organ is mainly a hearing organ. Just मैंने अभी check किया एक बार. जब diagram में भी गलत मिला था. This is a hearing organ only. ठीक है? This has a mistake. So this is mainly ना helps in hearing in case of the grillus वगैरह. Okay, this is not helps in reproduction. So this is wrong. This one I will remove anyhow. Just a second. How can I remove this? Just remember, this is not helps in Siebold's helps in reproduction. Maybe this is a wrong. This one is wrong. So don't follow this one. Okay. This one is given wrong. So just for correction, this one is given wrong. Siebold organ is mainly. This is a like hearing organ, Crista acoustica. Mainly helps in hearing. This is not. Okay. So this diagram is wrong. Just don't follow this. Don't follow this diagram. Don't follow this one. Then insecticidal activity of Bacillus thuringiensis. Okay, answer already came. No. This one is Hane. This is directly from इसमें ये टर्म लिखा है crystals. इसको याद करो. Directly taken from direct book line. ठीक है? This is given by Hane and Fitzjames. Hane. Okay, good. Ishiwata नहीं दिया था first. Ishiwata 1901 में बताया था बीटी के बारे में Bacillus sotto and 1911 में Berliner. In the marathon class, you just go through once. उसमें मैंने पूरा history बताया था. पूरा history of BT बताया था in IPM marathon. ठीक है? Okay. So this is the mock test series and other course also you can purchase. Kleptobiosis is a form of symbiosis wherein one species of ant live in or near the colony of another species and feeds on the stored food in the colony. Statement 2, kleptobiosis is also known as kleptoparasitism. Yes, both are correct. Good. Both are correct.
Mainly kleptobiosis is a form of symbiosis only, where one species of ant mainly lives in. Klepto means like theft, one kind of kleptobiosis, theft करना, मतलब एक टाइप का सिम्बायोसिस भी होता है, और क्या करता है, कोई एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे का जो स्टोर्ड फूड होता है उसको फीड करता है. Is a symbiosis wherein one species of ants live in the colony or near the colony of another species and feed on the stored food in the colony. And kleptobiosis is also known as kleptoparasitism, one kind of theft. There is a thing of theft. Okay, so both are correct. Average honey production by Apis dorsata is more than Apis mellifera. Answer key was given wrong for this. An average honey produced by Apis laboriosa is slightly higher than Apis dorsata. Both the statements are correct, both the statements are incorrect. One correct, two incorrect, one incorrect, two correct. देखो बेसिक क्वेश्चन है ये, इसका मैं बता रहा हूँ. जो होता है एपिस डॉर्सटा इज मोर देन एपिस मेलिफेरा, इट इज नॉट ट्रू. मेलिफेरा इज मोर. अगर आप एवरेज देखोगे 45 to 180, और डॉर्सटा में कितना होता है 37 एवरेज. सो इसका ही ज्यादा हो रहा है, दिस इज मोर. एंड एवरेज हनी प्रोड्यूस्ड बाय लैबोरियोसा इज स्लाइटली हायर. यस, Laboriosa is the Himalayan honeybee, 60 kg. This is Himalayan honeybee, 60 kg. This is slightly higher than dorsata. Okay. So, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. This should be the correct answer, D. D should be the correct answer for this question. Yes, D, good. This one, Bharoda mite, colony collapse disorder, neonicotinoids, deforestation, climate change. Anyone? Bharoda mite, Bharoda jacobsoni, this is the parasite. Climate change reduces the pollen and nectar source. Deforestation के लिए क्या होता है, habitat loss होता है. Colony collapse disorder, I told in the classes only because of neonicotinoid insecticides, मतलब because of like insecticides के कारण, या फिर वर्कर बी का जो लॉस हो रहा है एज ए होल, उसको कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर बोलते हैं. माइट्स के कारण भी हो सकता है. और नियोनिकोटिनॉइड्स के कारण क्या होता है, द पेस्टिसाइड दैट harm the bee nervous system, as it is like the N-acetylcholine receptors and antagonist modulator, you can say as a whole. So वो क्या करता है कि जो that particular receptor NACHR is specifically present in bees only. That's why specifically present in insects only, and bees are also insects. That's why they also attack the bees also. Bees can damage too much. So this is the correct answer. A2, B3, C1, D5 and E4. Holopneustic, apneustic, branchiopneustic, it should be like lastly hemipneustic. Tell me the answer. Very basic, सबको पता है ये. So holopneustic means complete, मतलब 2 plus 8. Apneustic means no. Branchiopneustic means gills. Hemipneustic means 2 or more are non-functional. मतलब A3, B4, C1, D2. A3, B4, C1, D2. ठीक है. Skipjack click beetle have the ability to suddenly leap up into the air with a clicking sound. Statement 2, click beetle are known as wireworms.
वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका. So you know about click beetle. So as you know, click beetles, they are also from the Elateridae. They are from the family Elateridae. Yes, good. Both the statements are correct. क्यों? ये जो स्किप जैक क्लिक बीटल होता है, उनका एबिलिटी क्या होता है? सडन लीप करने का, एयर में प्रोपेल करने का. कैसे? Pro-sternal spine, it pushes into the mesosternal cavity. That's why they jumps and produced click sound. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रोस्टेनल स्पाइन मेसोस्टर्नल कैविटी के अंदर जाने के कारण दे कैन जंप, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट होता है, दे विल प्रोपेल इनटू द ईयर एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ क्लिक साउंड आल्सो. और क्लिक बीटल्स को वायरवर्म्स भी बोला जाता है. दिस इज आल्सो ट्रू. क्लिक बीटल्स आर आल्सो नोन एज वायरवर्म्स. द प्रोसेस ऑफ evaluating biological or scientific and economic evidence to determine whether a pest should be regulated and the strength of any phytosanitary measures to be taken against it. Pest free area, pest intensity, pest risk assessment, pest risk analysis. Answer for this? Yes, very good. This is also known as PRA. And this is the direct definition of PRA. मतलब क्या होता है ना PRA में? Simply this is like evaluation of any biological or scientific or any economic evidence. उसे क्या evaluate करते हैं? लेकिन determine a pest population, like it should be regulated, and the strength of any phytosanitary measures has to be taken. Like this is as a whole is known as PRA or pest risk analysis. These things we used to do in our RAWE things, the BSc in agriculture, BSc agriculture. So this is the direct definition of PRA, pest risk assessment. Okay. ओके सॉरी इट इज असेसमेंट था इधर. सॉरी एनालिसिस होगा. मैंने यही बोल रहा था, मैं एनालिसिस बोल रहा था और बोल दिया असेसमेंट. सो दिस इज पेस्ट रिस्क एनालिसिस, द PRA. ओके, यस इट्स एनालिसिस. डी गलती से मैंने ये कर दिया. नो, दिस इज नॉट PRA, पेस्ट रिस्क एनालिसिस. यस थैंक यू फॉर करेक्टिंग. या मतलब मैं एनालिसिस बोल के असेसमेंट में टिक मार दिया. कोई नहीं. PRA इज द पेस्ट रिस्क एनालिसिस. दिस इज द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ इट. जल्दी फिनिश करते हैं. द यूजी फ्लाई इज अ लार्वल पैरासिटॉइड ऑफ सिल्कवर्म, हाइट बीटल और द डार्मास्टेस फीड ऑन सिल्क प्यूपा एज वेल एज कोकून. सिंपल क्लास का क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या है? Yes, both are correct. So Usifly is a larval parasitoid from the family Tachinidae और इसका ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा. और साइंटिफिक नेम इज एक्सोरिस्टस ऑर्बिलेंस. और हाइट बीटल जो होता है डार्मास्टेस, दैट मेनली फीड ऑन सिल्क प्यूपा एज वेल एज द कोकून. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बेसिक क्वेश्चन. Match the list. This one: white rice borer, rice keeper, striped rice borer, rice grasshopper. Pelopidus mathias, Triporiza inotata, Chylosuppressalis, Hieroglyphus banyan. Anyone answer it quickly? Yes, very good. Correct answer is B. Pelopidus mathias, it is the rice keeper, simply from the family Hesperidae or the family of skipper. Then striped rice borer, मैंने क्लास में बताया था,
Chylosuppressalis and Chyloporic that day I told in the class. Then rice grasshopper, you know, Hieroglyphus banyan, causing the nibbling. And white rice borer is the Scripophaga inotata. Previously it was known as Triporiza inotata, but it is like the Scripophaga or Sarcophaga inotata. Okay. Which disease is caused by a fungus, Beauveria bassiana, in the silkworm? Anyone? Which disease is caused by a fungus? Yes, good. Muscardine or mummification, mainly the tracheal system affected. Okay. Now this one, basic one-liner question था वो सब. Parasite, predator, parasitoid, cannibalism. Parasite, predator, parasitoid, cannibalism. Pediculus humanus, head louse, Panthera leo, tiger, Trichogramma embryophagus, and Helicoverpa armigera. Very easy. This is the scientific name of tiger. I think this is Panthera leo means I guess lion or tiger most probably. Leo means I think lion होना चाहिए. लियोनेल मेसी उसका तो लायन ही ऐसा था. Lion. This is Leo means lion. मेसी के नाम से. Okay, आंसर बोल रहे हैं आप लोग B. Tiger is I think Panthera tigris. That is tiger. This is lion. Okay. So cat species ही होता है Panthera tigris, Panthera leo, etc. So parasite सब बोल रहे हैं आंसर B. B में parasite is how B? How B is the answer? Just see. हो गया. Cannibalism हो गया. Then parasite is the this one. Predator is the this one. तो क्या हो रहा है? 1A, B के साथ 2, C के साथ 4, D के साथ 3. 1A, B2, C4. A should be the correct answer. Why you are telling B all? Correct answer is A. Parasite, you know, head louse, human parasite. Human parasite भी होता है ये. Then Panthera leo is the lion. It's the predator. And cannibalism, you know, the caterpillars of Helicoverpa can feed each other. Same जो अपना species है उसको feed करता है. That is cannibalism. That is seen in Helicoverpa armigera. And Trichogramma is the parasitoid. So this is the last question. Ethylene dibromide is a red color liquid, is a colorless liquid, has nematicidal value first described by Carter, has nematicidal value first described by Christie. Can anyone tell what is the answer? Not C. Yes, B and D correct. Very good. It's a colorless liquid. It was first discovered by Christie. So both B and D correct. Carter ने discover किया था DD को. ठीक है? And it's a like colorless liquid. Very important. Okay. इसके बाद the general agriculture portions are started. So that will be mainly dealt by other mentors. So these general agriculture extension questions. So ये other mentors deal कर लेंगे. Entomology up to this इतना तक था.
And I think this question is also from nematology only. So पूरा जो है बस एक चीज आप लोगों को थोड़ा careful रहना है, that's it. So this one na, I think from where I got this, it is like somehow they have done some mistake in this diagram. So apologies from my side only. So this one you just ignore this diagram. I will remove this one as it will be available. So I'm like this is from my side only. This diagram is somehow has mistakes. So don't follow this. Okay, this is wrong diagram. Okay, this is wrong. Just remember that seaboard organs, it's mainly a like mainly helps in hearing, not any kind of reproduction के साथ इसका कोई relation नहीं है, ठीक है? That's it. So that's it. This is like the previous year question discussion for ICAR PG examination 2025 for entomology. So if any doubts or anything arise, then you guys can ask me. So no issues are there, like in the chat box also, in the comment box also you can further ask me. Okay. Maybe some lagging issues are happened today. It may be a problem, I think. So if anything you want to know, anything you want to ask, you simply like ask in the comment box, as well as the nematology part of this examination and the general agriculture part of this examination. This will be like completed by Rupini ma'am only. So don't worry for that. And yeah, best of luck for the examination. And please follow the marathon series properly and attempt mock tests. For the last minute, read basics. Read the basic books like Insecta 1, Insecta 2, TB Prasad, like Treatise, then Refresher, then DS Reddy, the normal books which you have, one-liner books which you have, that things only you read. Try to memorize or try to grasp more and more informations at this moment. थोड़ा current affair चीज को भी अच्छे से देखो. Okay. And yeah, best of luck to you all. I hope you all will rock in the examination for ICAR PG examination. You all will do your best and you all will secure the fellowship. हाँ, कुछ fellowship is also limited, but hope for the best. सबको अच्छा हो, अच्छा college मिले. This is last from my side. And yes, best of luck and good luck to you all. Sir, what about morphology, physiology, and taxonomy classes? Because my time is completed here, I have some other works also for morpho, physio, taxo. Let's see, we will contact our other mentors. If they get time, they will take the classes. Neither just read by yourself. Like, let's see, I will ask our other mentors, Saurabh sir and others. If they conduct it, it will be fine. Neither like you have to read at the last moment. The basic insecta books you just read properly for this morphophysio and taxonomy classes. Yeah. Okay.